A large part of the country remains in the grip of intense heat wave with the maximum temperatures soaring above 45 degrees Celsius. Now with this has been the hottest June in the past 15 years. On the other side is the Met Department that is now predicting there will be some relief from the intense heat from the 19th of June. Here's a report. North India is in the throes of a merciless summer. Facing record-breaking heat wave worsened by climate change, the onslaught of intense heat is not subsiding, with temperatures forecast to scorch at a brutal 45 degrees Celsius. City authorities across the north have also warned of a risk of water shortages and the power grid tripping. But this isn't your average summer heat. National capital and several other North Indian cities have been stuck on broil for 8 days straight, with temperatures well above 40 degrees. June has been unusually hot, setting a new record for the highest temperature recorded in the month, a scorching 47 degrees Celsius in a decade. मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है ताकि लोग समझें और जरूरत न हो तो घरों से न निकलें। Climate change, predominantly caused by burning fossil fuels and exacerbated by human interference, is making heat waves hotter and more likely to happen everywhere in the world. फिलहाल दिल्ली में गर्मी है। कल की अगर हम बात करें तो 45 डिग्री तक तापमान चला गया था। तो अभी क्या है, अभी भी ऐसा है कि रेड अलर्ट जारी हो सकता है, आने वाले दिनों के लिए भी तापमान बढ़ेगा। मैडम, आज और कल के लिए हमने रेड अलर्ट जारी की है दिल्ली के लिए। ये दिल्ली को इसलिए रेड अलर्ट में रखा है क्योंकि दिल्ली में सिर्फ मैक्सिमम टेम्परेचर ही हाई नहीं है। जैसे आपको पता है, आपने जैसे बताया कि हीट वेव का स्थिति चल रहा है, वार्म नाइट का भी स्थिति चल रही है, यानी कि रात का टेम्परेचर भी नॉर्मल से काफी बढ़ी हुई है। Meanwhile, the Met Department has predicted some relief from intense heat from June 19 onwards. Delhi is expected to see slight relief, with the city falling back to a yellow alert on Wednesday and Thursday. This consistent rise in temperatures is a clear indication that climate change is real. Bureau Report, India Today.